Hello everyone there, how are you? So welcome back to our second lecture of forms of business organization class 11th of course base studies. Now we are going to start with the merits. Already we've done features in our last class. We are going to start with the merits of sole proprietorship business. Okay, I hope you have studied through it through your NCRT or any other book, your reference, and you have well understood the features of sole proprietorship. Okay, now come to the merits. The first merit you can see here is the quick decision making. Suppose if there are more than one person to take the decision simultaneously, then it may cause any delay. It may cause a delay for taking the decision. Reason being, many of the person will be involved in taking the decision. So when more than one person is involved in taking the decision, it may cause delay because every person will have his own views. But in case of proprietorship, since it is a single owner business, the single owner, there is no interference or interruption from any other person, so he can easily, without any kind of delay, may take the decision, and the decision making will be quick and fast. Okay, then now come to the second point, that is confidentiality of information. Confidentiality means secrecy of the information. In case when you are doing with the partner, going through the partnership business or company or any other kind of business which involves several persons associated with the business, so there is a lack of secrecy maintained because you have to share the information, you have to share the information from other person also. But in case of sole proprietorship business, the information is kept confidential, secret. Reason being, there is a reason being, there is no need to share information from other persons. And in case of companies and other form of business, by law also, by law यानी किसी कानून के तहत. So in case of company and other business, by law or because of the law, you have to share information with the government. Like you have to make your information public in case of companies. All the financial accounts, that is balance sheet and profit and loss account, which you will be studying in your accountancy part of the accounting subject. That information has to be disclosed to the public. But in case of sole proprietorship, there is no needed disclosure required. There is no need of disclosure of your confidential information. You can keep it very secret. आप इससे डिस्कस नहीं करोगे, नहीं बताओगे, तो भी आपको कोई बोलने वाला नहीं है. हाँ हाँ, पर अगर कुछ ऐसा आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चालू हुई है, कुछ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होगा बिजनेस में, आपके किसी फ्रॉड वगैरह किसी भी रीजन से, तो फिर आपको शेयर करने पड़ सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट जनरली इसको शेयर करने की जरूरत नहीं होती है. नाउ डायरेक्ट इंसेंटिव, this is the third merit of your sole proprietorship. Direct incentive means when you directly get the reward of your doing the business. Suppose in case of other business, you have to share the profit with other persons also. Suppose there are three partners in a business, A, B and C. Partner B is working very hard in a business, but ultimately the profit will be shared between A, B and C. Means A and C will also take the indirect incentive of working hard by B, or due to the hard work of the B. But in case of sole proprietorship, there is only single person, and being a single person, if he work very hard, all the incentive will be directly received by him. There will be no other person to share. So it is a direct incentive, direct reward, direct profit. Okay. Fourth is sense of accomplishment. This is the thing which gives you a personal satisfaction, because if you are working for yourself, then you will be getting the reward, and it will give you self satisfaction. That is called personal satisfaction. Suppose if you have worked very hard but you have shared the profit with other person, you may not get the personal satisfaction. But here, all the things you are alone, you are managing, all the things are done by you, then all the credit will be given to the person who is doing the business. So there is a personal satisfaction involved in working for oneself. The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contribute to self satisfaction but also instills in the individual sense of accomplishment and confidence in one's ability. देखिए बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस है तो क्रेडिट सबके पास जाएगा, बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आप बोल सकते हो ना, आप अकेले तो करने वाले हो, आप बोल सकते हो देखो मैंने करा, है ना. प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया तो आप बोलोगे अरे मैंने ही करा, राइट, क्योंकि आप अकेले ही सारे बिजनेस को संभाल रहे हो. तो आपको क्रेडिट किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा, तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगा. और फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर. ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर कहीं देखो आपको मिल रहा है. कहाँ पर मिला था? फीचर्स में भी था, ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर. यहाँ पर भी ऑलरेडी आप डिस्कस इन फीचर्स, तो आप इसको पॉइंट को वहां पर भी देख सकते हो. पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती. देयर इज नो मच फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. ओनली देयर इज नो need of, sometimes there is no need of license also, but if license is required, it is a very it can get in a very nominal fees and without any kind of much detailed formalities and procedures, right? So
Now come to the limitations of sole proprietorship. First limitation is very everyone can tell this limited resources, because if sole proprietor is a single person who is managing or controlling the business, then of course he may face the financial crisis, because the fund required in the business has to be arranged by himself. He is the only person who is required to arrange all the funds. So sometimes he may face financial crisis, and that is the biggest limitation of the sole proprietorship. है ना, कि पैसों की कमी हो जाती है यार, अब पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि एक अकेला बंदा है, चार जने होते तो चारों लेके आती है, अकेला है तो अकेला इसको पैसे लाना पड़ेगा. सो लिमिटेड रिसोर्सेस वहाँ पे दिखे जाते हैं, राइट. Banks and other lending institution may hesitate to extend a long term loan to the sole proprietor. बैंक भी बोलती है कि यार हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, फिर आपको अगर आप अकेले हो चुकाने के लिए तो फिर आप कितना चुका पाओगे, राइट. पार्टनरशिप वगैरह फॉर्म होती है तो वहाँ पे पार्टनर ज्यादा होता है, गारंटी सब लोग देते हैं, तो ज्यादा पैसा बैंक से भी मिल सकता है. पर यहाँ पे अकेला बंदा अगर बैंक के पास लोन लेने जाता है तो इसको इतना अमाउंट ऑफ लोन भी नहीं मिलता है, तभी इस बिजनेस की साइज बहुत छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती. लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, ऑफ कोर्स मैंने आपको जो इसके फीचर्स में बात करी थी कि इज द ओनली पर्सन इज मैनेजिंग द बिजनेस, और वहाँ पर अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसकी डेथ वगैरह पर, इंसॉल्वेंसी की और इंसैनिटी होने पर बिजनेस खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है, कोई दूसरा उसको चलाने वाला नहीं होगा. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी. वेरी गुड. अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हिज पर्सनल एसेट ऑफ द प्रोप्राइटर कैन बी सोल्ड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ liability unpaid, any kind of money unpaid to the creditors or lenders. His personal asset, car, etc., can be sold to repay the financial debt. Then limited managerial ability. Suppose बेटा अगर ज्यादा पर्सन है, जैसे पार्टनरशिप में कंपनी में, तो वहाँ एक्सपर्ट होते हैं. कंपनी hires the experts. एक्सपर्ट में भी द टेक्निकल एक्सपर्ट में भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, तो ये एक्सपर्ट होते हैं, तो कंपनी उनको पे कर सकती है. इसलिए एक्सपर्ट डिसीजन लेने के लिए, कंपनी के जो मैटर्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बुला सकती है, क्योंकि उनको पे करना पड़ता है ज़्यादा, और कंपनी कैन बियर इट, क्योंकि कंपनी इज अ वेरी वाइड ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन. बट यहाँ पर अकेला बंदा सारे चीज़ों को संभाल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी मैनेजरियल एबिलिटी हर चीज़ में इतनी अच्छी नहीं है, राइट. हो सकता है वो किसी एक चीज़ में अच्छा है, तो शायद हो सकता है दूसरी चीज़ में अच्छा ना हो. तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो एबिलिटी होती है मैनेज करने की चीज़ों को, वो यहाँ पर कम पड़ जाती है. तो हियर वी एंड विद द टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, चलिए यहाँ पे फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. टिल दैट टाइम प्लीज रीड इट केयरफुली. कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, डाउट पूछिए. और हाँ, प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिए, आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि जिन लोगों को बेटा नहीं मिल पाए हैं लेक्चर्स, या जिन लोगों को लगता है कि वो ऐसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वो भी इसका फायदा ले पाए. सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. इफ यू एक्चुअली लाइक, देन लाइक. ओके, चलिए टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.